दिल्ली, डबलिन, मुंबई या मेलबर्न। आप जहां से भी ये वाली वीडियो देख रहे हो, and if you are PhD scholar, then this video is going to be the game changer video for you. In our PhD journey, we usually have time management issues, डेडलाइन पास आ रही होती है, थीसिस हमारा अनटच्ड होता है एंड वी आर लाइक कल कर लूंगा, अभी समझ में नहीं आ रहा, फिर देखता हूँ इसको कैसे करना है। सम पीपल आर मैनेजिंग देयर पीएचडी व्हाइल वर्किंग। उनके लिए ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू मैनेज देयर पीएचडी टास्क। इफ यू आल्सो फेसिंग दिस सर्कल एंड यू आर स्टक इन कल कर लूंगा वाले सिचुएशन, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एआई असिस्टेंट जो आपकी हेल्प करेगा आपके टास्क को स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट करने में, एंड ऑल्सो हेल्प यू break your procrastination and your writer's block. Hello everyone. I'm Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management and founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help PhD scholars across globe to plan, write and complete their PhD journey confidently. Today in this video, I'm going to give you exact timetable जो मैंने अपने PhD के टाइम पे यूज किया था एंड जिसने मेरे थीसिस को कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। सो डोंट मिस आउट दिस वीडियो बिकॉज एंड में मैं आपको अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल का स्ट्रक्चर, प्रॉम्प्ट और कुछ बोनसेस देने वाली हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी मेरी PhD कंप्लीट करने में। लेट्स बी रियल, व्हाई डू मोस्ट PhD टाइम टेबल्स फेल? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर टू ब्रॉड, they are too rigid and the most important one, वो हमें मोटिवेट ही नहीं कर रहे होते हैं। बट इमेजिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स बताऊं जो आपके बिगर टास्क को स्मॉलर सेक्शंस में कन्वर्ट तो करेंगे ही, प्लस वो आपको एक नया रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसे आप उस डिफिकल्ट टास्क को इजी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। इफ आई से दैट यू कैन यूज ChatGPT टू ब्रेक योर बिग गोल्स इनटू वीकली, डेली और hourly micro task. Google Calendar plus Todoist syncing writer's block into your actual day. Notion AI doing all your weekly reviews so you always stay on track. And the Pomodoro AI app, my favorite, nudging you to focus in your most productive hours. है ना ये पावरफुल? अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इन एप्स को यूज कैसे करना है। Step number 1, set your big writing goals plus plan backward with AI as your buddy. Let's start at the end. Where do you want to be? Ask yourself, when do I want to finish my thesis? Open Google Calendar and mark that dream submission date. Now look backward. How many months do you have? How many weeks? This is where AI can help you map the road. Use this prompt in ChatGPT and then see the magic. Add that plan to Google Calendar, color code your chapter, add buffer weeks, and give yourself breathing space. Step number 2, break it down into weekly and daily micro goals. It will break them into small pieces that feel doable. Use this prompt and you will see how your weekly goals are converted into daily and manageable tasks. And for daily tasks, think small wins. Break it into 25-minute sprint, the Pomodoro way. Step number 3, protect your writing time, plus adjust as you go. Your writing time is precious. Block 1 to 2 hours a day. Label it PhD writing, no interruption. Pro tip, morning writing is equal to fresh mind and better focus. Do try it. Use the prompt I'm giving you on screen and then see how you can manage your PhD writing. What if you miss a block? Don't worry, ChatGPT will handle. Give ChatGPT a prompt and it will adjust your timetable according to what is being missed. Step number 4, prioritize, review, and adjust. Life happens, work, family, health. It's okay. Use tools like Notion AI or Todoist, set priority. Do a gentle weekly review. Use the prompt given to you on the screen. Step number 5, stay accountable and keep your motivation alive. Writing a thesis is like a marathon. Let's keep your energy up. Share your plan with your friends or fellow scholars. Try Habitka or set up Slack reminders with Zapier. Gamify it. Use the prompt and then see how AI is going to be your best buddy while helping you manage your time. Want all these prompts and the timetable
comment motivation, and we are going to deliver it to you. अब ये तो समझ में आ गया कि आपको ये सारी एप्स को और प्रॉम्प्ट्स को यूज कैसे करना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन मिस्टेक्स एंड मिथ्स जो यूजुअली हर पीएचडी स्कॉलर करता है while they are using these tools or they are doing it manually. Mistake number 1, unrealistic timetable leads to guilt plus burnout. इसको फिक्स कैसे करना है? AI can actually help you realistically to plan what to do and when to do. So you can take their help. So AI actually helps you plan realistically. So अब आपको boring task को खुद से manage करने की जरूरत नहीं है. Mistake number 2, no daily structure that leads to your time leak. AI आपको हेल्प करेगा कैलेंडर ब्लॉक करने में एंड पोमोडोरो ऐप आपको हेल्प करेगी उसको मैनेज करने में. मिस्टेक नंबर 3, रिजिड प्लान्स इज इक्वल टू नो फ्लेक्सिबिलिटी. 9 to 2 करना ही करना है, इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है. सो AI कैसे आपको हेल्प कर सकता है? रिव्यू डेली एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट योर टाइम टेबल विद द हेल्प ऑफ AI. सो वो आपको नेक्स्ट डे भी बता सकता है कि कैसे उसको मैनेज करना है. So these are some common mistakes जो usually हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं. But if we are using AI in a systematic manner, तो हम इसको rectify कर सकते हैं. ये तो वो कुछ common mistakes थी जो मैंने आपको बताई हैं. If you are also making any mistake and you want to know कि आप उसको कैसे fix कर सकते हो, so comment करो. मैं personally हर comment का reply कर रही हूँ. We are also running a PhD mentorship program जहां पर मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होती हूँ आपकी पीएचडी की जर्नी में एंड आई गाइड यू क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आप अपने टास्क को और सिंप्लीफाई कर सकते हो. इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन. आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे एंड हेल्प यू इन योर पीएचडी जर्नी. चलो अब फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है अपनी पीएचडी की जर्नी में. रिमेंबर, सेट द बिग गोल एंड देन ब्रेक इट डाउन इन स्मॉलर सेक्शन. यूज AI स्मार्टली, नोशन, ChatGPT, टूडूइस्ट और गूगल कैलेंडर. एडजस्ट प्लस रिव्यू, स्टे फ्लेक्सिबल. जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतनी जर्नी इजी लगेगी. प्रोग्रेस डेली. इवन 200 words a day is a big win. Always remember, AI is your assistant. Your hard work, your passion, and your motivation to complete your PhD will always work. No matter आप कितने calendars बना रहे हो, no matter कितने timetable बना रहे हो, no matter who is going to help you, guide you, mentor you in your journey. अगर आप अपने काम के लिए dedicated नहीं हो, if you are not motivated enough to work in your PhD, आपकी PhD कभी भी पूरी नहीं हो सकती है. So if you are also going through this phase कि मुझे नहीं करना है और मुझसे हो नहीं पा रहा है, just sit for 5 minutes. Think कि आपने अपनी PhD क्यों शुरू करी थी. There must be some goal, there must be some sort of motivation जो आपको PhD दोबारा स्टार्ट करने में हेल्प करेगी. और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, so we are also providing 1-to-1 consultation. All the links are in description. आप हमें contact कर सकते हो. And we are going to help you in this also. I hope आज की इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा to understand how you can manage your time effectively and efficiently. Still you have any doubt, you want to discuss something, we are always open to help. All the links are given in description. We also offer 1-to-1 consultation. You can DM us on Instagram or Facebook and we are going to help you in your journey. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye.